अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना मेडिसिन का पेपर नंबर 5। ठीक है, फिर सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बिगिन। अ पेशेंट डेवलप सडन पर्पसलेस jerky movements of arm causing fracture injury to herself। तो ये इसमें लीजन कहाँ पे होगा? पेशेंट को सडन पर्पसलेस jerky मूवमेंट है। सडन पर्पसलेस jerky मूवमेंट आपको मिलती है इन ऑप्शन नंबर सी हेमिपेलिस्मस। स्लो रिथिंग मूवमेंट को हम कोरिया कहते हैं। सडन जर्की पर्पसलेस मूवमेंट को हम हेमिपेलिस्मस कहते हैं। अ पेशेंट हैज़ हाइट ऑफ 200 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 100 kg। तो BMI किस तरह कैलकुलेट करनी है? वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो इससे आपके साथ 25 आ जाएगा। वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो ये आपके साथ 100 divided by 4 which is equal to 25. A patient smear reveal target cells and Howell jowl bodies। तो टारगेट सेल्स और हाउल जॉल बॉडीज़ आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं इन हाइपोस्प्लीनिज्म। तो ये याद रखना है, यू विल सी हाउल जॉल बॉडीज़ इन हाइपोस्प्लीनिज्म। फिर है अ पेशेंट presents with increased cell lines and teardrop shaped cells on blood smear। तो पेशेंट को जो है he has increased cell lines and teardrop shaped cells हैं on blood smears। तो appropriate investigation इसमें क्या करनी है? You have to do MPL, you have to do JAK2 mutation आपने देखनी है। ठीक है, इसमें पेशेंट को टीयर ड्रॉप सेल्स हैं ऑन ब्लड स्मीयर और इंक्रीज सेल लाइंस हैं, तो यू हैव टू सी फॉर JAK2 म्यूटेशन। फिर है मेल presents to OPD with 104 fever for last 4 days and gives history of using anti-malarial। He came with lethargy, now with deranged LFT and increased unconjugated bilirubin। HB 4.8 है, तो इसका कॉज आपके साथ क्या है? एंटी मलेरियल यूज़ कर रहा है और उसके बाद ही इज़ हैविंग इंक्रीज बिलिरूबिन, HB कम है, दिस इज़ G6PD। Person came from some other country, presents with fever for some days, rash on elbow and generalized cervical lymphadenopathy with hepatosplenomegaly। तो ये आपके साथ कौन सा इसका कॉज क्या है? दिस इज़ ग्लैंडुलर फीवर। Patient presents with rash and nodules on face. There are many macular lesion present and nasal blockage भी आपको नज़र आ रही है। तो जब भी nasal involvement हो और रैश वगैरह की बात हो, लेप्रेसी आपने चूज़ करनी है। 60-year-old patient presents with headache, neck stiffness, photophobia on lumbar puncture, ग्लूकोज इस 40 और न्यूट्रोफिल रेज्ड है। तो इसमें आपने प्रेफर्ड ट्रीटमेंट में क्या देना है? यू हैव टू गिव सेफ्ट्राइक्सोन एंड एम्फिसिलिन, ऑप्शन ई। फिर है 40-year-old lady presents with hepatosplenomegaly, pruritus, xanthelisma and jaundice for last 3 months। तो जब भी प्रेग्नेंट लेडी हो या लेडी की बात हो उसमें जेंथेलिज्मा जॉन्डस, तो उसमें आपने क्या देखना है? यू हैव टू सी द AMA। Patient with right upper quadrant pain, there is previous history of gallstones on ultrasound, choledocholithiasis a year back, now best investigation to reach diagnosis क्या होगी? That will be your MRCP। Whole wheat is a rich source of, तो whole wheat आपके साथ rich source किसका है? थायमीन का। फर्स्ट स्टेप इन बिगिनिंग ऑफ कैंसर क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में आपको मैंने कहा था कि MIP याद रखना है। मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म। तो मेटास्टेसिस नहीं है, ये मेटाप्लेजिया है। मेटास्टेसिस होता तो आपने वो पिक करना है, फिर सेकंड पे इन्वेजन और फिर प्लियोमॉर्फिज्म। फर्स्ट स्टेप ऑफ फेगोसाइटोसिस क्या है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फेगोसाइटोसिस इज़ द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सेल। आफ्टर डायपिडीसिस साइटोकाइन इन्वॉल्व इन कीमोटेक्सिस। तो कीमोटेक्सिस के बारे में याद रखो कि इसमें C5A इन्वॉल्व होता है। DIC कॉन्सिक्वेंस किस चीज़ का है? DIC आपके साथ इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमंगस्ट द फॉलोइंग। DIC किससे होता है? ड्यू टू सेप्टिक शॉक। पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर विच इज़ नेगेटिव फॉर मलेरिया। ही हैज़ ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेटिक। Which factor makes him a candidate for hospitalization?
तो कौन सा फैक्टर है विच मेक्स हिम कैंडिडेट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन? दैट इज़ शिफ्टिंग डलनेस ऑन एब्डोमेन। ये डेंगू फीवर है, इसमें शिफ्टिंग डलनेस ऑन एब्डोमेन आपको नज़र आएगी। इम्यूनोग्लोबिन इन हाईएस्ट कंसनट्रेशन इन द ब्लड, जिसकी सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो IgG है। Patient of asthma came in ER, his FEV1 by FVC ratio is less than 65%. तो ये obstructive pattern हो गया. All initial treatment given, what will be the resultant increase in ratio after treatment with bronchodilator? तो bronchodilator के बाद there is 12% increase in the ratio. Woman presents with headache, palpitation, hypertension, hyperglycemia. एग्जामिनेशन रूल्ड आउट डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो कुशिंग की तरफ जा रहा है जिसमें यू विल सी इंक्रीज प्लाज्मा मेटानेफ्रिन्स। फिर इसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट्स विद पल्सेटाइल हेडेक, पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट? तो इसको पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स आपने इसमें आपने फेनॉक्सीबेंजामीन देना है, ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन। पेशेंट विद लो ग्रेड फीवर, नॉन हीलिंग अल्सर ऑन टंग, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, ग्रेनुलोमा विद केशियस नेक्रोसिस, नॉर्मल हाइलर लिम्फ नोड्स, व्हाट ट्रीटमेंट? तो आपने एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी कितने मंथ्स के लिए देनी होती है? यू हैव टू गिव इट फॉर 6 मंथ्स। A patient with low grade fever, non healing ulcer on tongue, cervical lymphadenopathy, granuloma with caseous necrosis, नॉर्मल हाइलर नोड्स, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट रीजन? तो राइप, आप इसमें राइप देखो, RIPE जिसमें होगा ये इसमें दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, RIPE, राइप। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले आपने ग्लूटाथायोन पिक करना है, फिर विटामिन E, C और फिर A, सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। अच्छा, glutathione is greater than transferrin which is greater than ECA. टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन MI में हार्ट इन्वॉल्व होता है, जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, हेमाटेमेसिस on examination his abdomen was distended with positive shifting dullness, his sag ratio is 1.1. तो इसमें टाइप ऑफ एसाइटिस कौन सा होगा? अगर सैग रेशो इज़ 1.1 दैट विल बी सेरोटिक एसाइटिस। A patient has history of abdominal pain, hematemesis. On examination his abdomen was distended with positive shifting dullness, his sag ratio is 1.1. हेपेटोसाइट आपके साथ कौन से फेज़ ऑफ सेल साइकिल में है? दे आर इन G1 फेज़, तो ये याद रखो कि इसमें हेपेटोसाइट G1 फेज़ में होंगे। Patient with malaise and raised BP died because of hemorrhagic stroke in basal ganglia. On autopsy, bilateral small kidneys with petechial hemorrhages, hyperplastic arteriosclerosis and fibrinoid necrosis. What is the diagnosis? तो इसमें diagnosis आपको क्या मिलेगा? That is your fibromuscular dysplasia, option A. फिर है 55-year-old lady presents to the OPD with 6-month history of low-grade fever, marked aches, pains and muscle stiffness. फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको BP 140/90 नज़र आ रही है, टेम्परेचर इज़ 99, नो अदर फाइंडिंग, CBC HB9, WBC 9000 with normal differential ESR 85. In first hour, muscle enzymes, rheumatoid factor, ANA, blood sugar, सीरम कैल्शियम ये सारे नॉर्मल है। थायराइड एंड रीनल फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, तो इसका लाइकली डायग्नोस क्या हुआ? दैट इज़ योर पोलीमाइल्जिया रूमेटिका। वाइफ टेल्स दैट हर हस्बैंड इज़ नॉट बिहेविंग एज यूजुअल, ही फॉरगेट्स थिंग्स, डिमेंशिया है उसको। ही ऑल्सो हैड डायरिया फॉर द फ्यू डेज बैक एंड रैश ऑन द बॉडी। तो ये इसको पेलेग्रा हुई है, जो आपको नियासिन की डिफिशेंसी में मिलती है B3 की। पेलेग्रा में आपको 3 Ds मिलेंगे या 4 Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डेथ। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाइज एट मैंडिबल एंगल, सर्जरी ऑफ दिस विल लीड टू डैमेज ऑफ विच स्ट्रक्चर दैट लाई ओवर इट? तो इट विल लीड टू द डैमेज ऑफ मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अगर आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी करते हो तो इसमें सबसे पहले मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व डैमेज होगा, फिर लिंगुअल, फिर हाइपोग्लॉसल, फिर माइलोहायोइड नर्व और फिर मैंडिबुलर नर्व
will not be damaged, which is a branch of the trigeminal. Marginal mandibular nerve होगा, not the mandibular nerve, ये बात याद रखनी है. अच्छा, a patient presents with paralysis of right limb and right lower face lesion is present in which of the following. तो राइट लिम्ब में, राइट लोअर फेस में उसको लीजन है. ये क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया की तरफ जा रहे हैं. दिस इज़ अ केस ऑफ अनक्रॉस्ड, जिसमें इंटरनल कैप्सूल विल बी इन्वॉल्व्ड. क्रॉस्ड में मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है. पेशेंट प्रेजेंट्स विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस अलॉन्ग विद हेमोनमस हेमोनोपिया. तो ये आपके साथ लीजन कहाँ पे है? दिस इज़ इन योर फोर ब्रेन, ऑप्शन बी. कैबरगुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कैबरगुलिन इज अ D2 एगोनिस्ट, ऑप्शन डी. हार्मोनल थेरेपी प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच कैंसर? तो हार्मोनल थेरेपी हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी. पेशेंट आफ्टर इंजरी डेवलप कट एट वेसल. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन हीमोस्टेसिस आफ्टर वेसिकुलर इंजरी? आफ्टर वेसिकुलर इंजरी आपके साथ पेशेंट को इंजरी डेवलप हुई, कट एट वेसल. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन hemostasis? तो फर्स्ट स्टेप इन hemostasis इज़ योर वेस्कुलर vasoconstriction. Patient presents with hematemesis, endoscopy shows esophageal varices. Most appropriate first line treatment of variceal bleeding क्या है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन आपने वेरिसियल ब्लीडिंग में यू हैव टू गिव वेरिसियल बैंड लाइगेशन. इसको हेमाटेमेसिस है और आपको एसोफिजियल वेरिसिस नज़र आ रहे हैं, तो यू हैव टू डू वेरिसियल बैंड लाइगेशन. फिर इसके बाद है लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन आपके साथ कहाँ पे ड्रेन होता है? लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इनटू द पोर्टल वेन, ऑप्शन ए. पेशेंट प्रेजेंट्स विद bleeding from the posterior duodenal ulcer rupture. Which of the following artery is responsible? तो इसमें कौन सी artery responsible होगी? posterior duodenal के पीछे आपको gastroduodenal artery मिलती है, ऑप्शन सी. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है. A patient develops fatigue and pallor. CBC has MCV 115, MCHC 30 है. मैक्रोसिटिक एनीमिया हो गई. ऑन इंक्वायरी patient told that in the past she has undergone gastrectomy 4 years back. Now what is the treatment option? तो अभी आपने इसको इंजेक्शन विटामिन B12 देना है. पार्शल गैस्ट्रेक्टमी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगी. कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया लाइक B12 एनीमिया हो सकती है. ठीक है, बिफोर 6 मंथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है और आफ्टर 6 मंथ्स यू विल सी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. ओवरऑल आपके साथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ ग्रेटर देन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. During exercise, respiratory rate is increased by which brain area? तो respiratory rate is increased by the motor cortex, option B. Most common cause of large vessel anomaly क्या है? That is your PDA. A patient has chest pain. There is infarction of posterior 1/3 of interventricular septum. कौन सी artery इसमें occlude होगी? That will be your option number D, RCA. Anterior 2/3 is supplied by the LADA, posterior 1/3 is supplied by the PDA, which is a branch of the right coronary artery. RCA का branch है. Left circumflex artery block है, तो क्या चीज़ affect होगी? Left atrium और left ventricle will be affected. A patient who is diabetic and hypertensive came with feeling of diaphoresis, lethargy and heaviness of chest. His lab shows HB 12.5, platelets 245, WBC 4.5, RFT shows urea 36, creatinine 0.9. What should be next investigation? तो investigation क्या करनी है? You have to do electrocardiogram, ECG करनी है. Patient having 15 years of diabetes have decreased visual acuity. It showed white spots and exudates on retina. तो ये white spot और exudate आपको central retinal वेन ऑक्लूजन में मिलेगी, ऑप्शन बी. सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में यू विल सी द वाइट स्पॉट्स एंड एक्सुडेट्स ऑन रेटिना. A patient who is known hypertensive and diabetic develops sudden loss of unilateral vision with cherry red spots. Which phenomena leads to this condition? तो cherry red spots है,
सडन लॉस ऑफ यूनिलैटरल विजन है पेशेंट को, दिस इज़ अ केस ऑफ embolism, option C. A patient known hypertensive and diabetic is facing difficulty in maintaining balance since morning. On examination, no other finding except nystagmus. तो likely diagnose क्या होगा? That is cardiovascular accident. फिर है patient sways back and forth, is having ataxia and drunken gait. Where does the neuron synapse in cerebellum and affected area? तो इसमें न्यूरॉन्स कहाँ साइनेप्स होंगे? दैट विल बी इन योर cerebellar vermis. फिर इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन क्या होगी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इज योर epithelioid cells, option B. A young boy having mass in neck biopsy of lymph node shows epiphysis architecture, atypical mononucleosis cells and bilobed nucleus and eosinophilia. CD15 और CD30 भी उसमें पॉजिटिव है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा. और रॉड्स और इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स आपको कहाँ पे नज़र आएंगे? यू विल सी देम इन योर AML में आपको और रॉड्स मिलेंगे. अच्छा, यूरिटिकेरिया एंड रैश ऑन द लोअर लिम, दिस इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का कोई सिनेरियो है. A patient already on sildenafil citrate for erectile dysfunction, which drug should not be given for lowering BP? तो इस पेशेंट में आपने नाइट्रेट्स नहीं देने. In which of the following condition a tissue cannot utilize oxygen regardless of being provided with enough oxygen? तो that is cyanide poisoning. यूटिलाइजेशन में मसला हो तो साइनाइड पॉइजनिंग, डिलीवरी में मसला होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन डिलीवरी. स्टीप कर्व ऑफ डोज रिस्पॉन्स ग्राफ इंडिकेट विच प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग? तो स्टीप कर्व ऑफ डोज रिस्पॉन्स आपके साथ इंडिकेट करता है स्मॉल डोज प्रोड्यूस चेंजेस. फिर है अ पेशेंट हैज़ ब्लैडर सेल कार्सिनोमा, इन्वेजन नॉट ऑकर्ड, yet feature of bladder wall which makes invasion difficult, so that is stratification of epithelium. Patient ascends to height altitude has increased breathing due to, तो इसमें increased breathing होती है decreased arterial PO2 की वजह से. Creatinine clearance of patient is 135, potassium clearance is 65. After administering another drug, potassium clearance becomes 102. What changes occurred? तो इसमें क्या चेंज होगा? दैट विल बी इंक्रीज पोटाशियम सिक्रीशन इन ट्यूब्यूल्स. आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पायरामिड क्या होगा? दैट विल बी योर इंटर आर्क्यूएट आर्टरी होगी एट द बेस ऑफ पायरामिड. फिर इसके बाद है पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहा है, उसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू, उसमें इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एट PCT. तो SGLT2 इनहिबिटर ले रहा है, उसमें क्या होगा? यू विल सी इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एट PCT आपको नज़र आएगा. SGLT2 इनहिबिटर के बारे में याद रखो कि इट इनहिबिट्स ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज यूरिया कॉज करवाता है और आपके साथ इंक्रीज़ करता है रीनल ग्लूकोज एक्सक्रीशन को, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन वगैरह भी आपके साथ कॉज करवाता है. Which of the following drug is distributed mostly in extracellular space? तो extracellular space में mannitol. अच्छा, 26-year-old male presents to you in surgical ER after penetrating injury to the right lateral chest. On examination, when he inspired, the mediastinum moves to left side, and during expiration, the shift towards the left side is enhanced. What is the most likely diagnosis? The most likely diagnosis is tension pneumothorax. A patient presents with chest trauma, presents with hyperresonance on left side of chest. The most likely diagnosis क्या है? That is your left pneumothorax. 20-year-old boy presented with yellowing of sclera with no nausea and vomiting. ALT was normal. Increased bilirubin 4 mg per deciliter, which was unconjugated. He just had eye discoloration which sometimes disappears too. तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में कह रहे हैं, रिपीटेड MCQ है.
ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। बाइल फ्रॉम liver and bile released in duodenum differ in concentration of bile salts. Young female child fell on her outstretched hand. She was looked after by her mother. She noticed tenderness around the anatomical snuff box area. Which of the following bone is most likely fractured in this patient? तो इसमें कौन सा bone fracture होगा? That will be your scaphoid bone. फिर है patient suffering from increased mucus production from last 6 months cough and hemoptysis. What change will occur? तो कौन सा change occur होगा? That will be increase bronchial thickness and dilation of bronchus. In radial injury, in radial nerve injury, position of wrist will be, that is option B, wrist flexion में होगा. Female child with karyotype 46XX presents with ambiguous genitalia, virilization and hypertension. इसमें कौन सी abnormality है? That is your congenital adrenal hyperplasia. Gut bacteria produce which vitamin in large quantity? तो gut bacteria आपके साथ vitamin K produce करता है. Mother of 12 children with progressive dizziness and fatigue, angular stomatitis since 3 months, और लो MCV है. तो दिस इज़ अ केस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. Hypertensive and diabetic patient using amlodipine and metformin develops bilateral leg edema. Cause of this edema कौन सा ड्रग है? That is due to amlodipine. अच्छा, child presents with frothy urine and proteinuria. Which part of the kidney is damaged? तो उसको frothy urine proteinuria है. इसमें आपके साथ glomerular basement membrane will be damaged. ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है. इट इज़ डन बाय द ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म. 27-year-old male presents with headache, fever, positive Kerning sign. CSF एनालिसिस पे इंक्रीज लिम्फोसाइट 90%, शुगर 64 mg per deciliter. तो इसमें लाइकली डायग्नोज यू विल सी वायरल meningitis. Diabetic person with sensory abnormality of foot develop ulcer of foot due to, it is due to angiopathy and neuropathy. After renal transplant, patient came with deranged renal parameter. Most common opportunistic infection after kidney transplant में पोलियोमा याद रखना है, ये रिपीटेड है. ECG shows no P wave, heart rate 46 है. ब्लॉक कहाँ पे होगा? तो no P wave है और heart rate भी 46 है. इसमें you will find block in the SA node. नर्व कंप्रेशन बिटवीन C5 एंड C6, तो C5 और C6 में नीचे वाला आपके साथ जो है वो कंप्रेस होता है, C6 होगा. Patient sustained injuries in RTA and then presents with gait problem on examination. He was asked to stand on his left leg. While doing so, his right pelvis sinks. Which of the following is the most probable damage? तो pelvis की बात आ जाए, ठीक है, उसमें gluteus medius और minimus आपने लिखना है. राइट पेल्विस सिंक है तो आपके साथ लेफ्ट ग्लूटस मीडियस होगा. अ पेशेंट विच इज ग्राम पॉजिटिव रॉट कैटलेज नेगेटिव बैक्टीरिया कॉलोनीज आर वेनकोमाइसिन सेंसिटिव. तो ये आपके साथ कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दैट इज़ योर ऑप्शन बी, लिस्टीरिया. एपेक्सिबान का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ क्या करता है? एपेक्सिबान डायरेक्ट फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है, 10A को इनहिबिट करता है. डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनहिबिट करेगा. पैराथायरॉयड ग्लैंड फंक्शन लॉस्ट आफ्टर थायरॉयडेक्टमी ड्यू टू डैमेज टू. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन लॉस हुआ है आफ्टर थायरॉयडेक्टमी बिकॉज ऑफ इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी में डैमेज हुआ है. पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी फॉर इंग्वाइनल हर्निया, इन्फेक्शन स्प्रेड इन एडक्टर कैनाल. विच स्ट्रक्चर विल नॉट बी अफेक्टेड? तो इसमें आपके साथ एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें कंटेंट नहीं है. दैट इज़ योर सेफिनस वेन. अच्छा, फिर है फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद लंप इन मिड लाइन ऑफ नेक, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया एंड हैविंग डायरिया, कैल्सिटोनिन रेज्ड. तो व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोज? दिस इज़ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा. टिपिकल सिनेरियो है इसका. अ पेशेंट हु वॉज क्रॉनिक स्मोकर हैज़ history cough with sputum containing blood, develop lung cancer and raised calcium level. It is likely due to squamous cell carcinoma of the lung. Patient of CKD on dialysis develop osteoporosis due to increased osteoblastic activity of. तो CKD में
ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ है उसमें यू विल फाइंड इंक्रीज osteoblastic activity of PTH. A patient has a history of migratory arthralgia on examination, heart murmur present, there is previous history of sore throat as well. What is the related diagnosis? तो इसमें rheumatic fever is the cause. Inherited disease is in which musculoskeletal growth occur is which of the following? Inherited disease in which musculoskeletal growth occur is आपके साथ है that is achondroplasia. Diagnosed appendicular tumor which has mucinous secretion called pseudomyxoma peritoni will spread how? So it will spread through the seeding to other sites. Patient with backpack, diarrhea, fatigue, stool culture show binucleate organism with trophozoites. Which drug you will give? तो आपने क्या ड्रग देना है? You have to give metronidazole. कैबरगुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया कि इट इज़ D2 एगोनिस्ट. उसके बाद है विच म्यूटेशन इन जीन कॉजेज कोलोरेक्टल कैंसर, तो ये केरास म्यूटेशन होगी. ठीक है. Which mutation in gene causes colorectal cancer? That is KRAS. You have recently diagnosed a 23-year-old man with schizophrenia and started him on haloperidol. Within a few hours, he developed muscle stiffness and his eye roll upward and he cannot move them down. What is the most likely diagnosis? तो इसमें most likely diagnosis is your acute dystonia reaction, dystonic reaction. फिर है middle part of aorta is supplied by the thoracic duct and bronchial arteries. Acetaminophen undergoes which metabolic process to appear in urine? तो acetaminophen में आपके साथ glucouronidation होती है. एंजाइम डेफिशिएंसी गुआनगिरकी में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. Which part of the limbic system associated with feeding and chewing? तो feeding और chewing में amygdaloid nucleus involve होगा. Patient with epilepsy on medial side of the temporal lobe now has developed impaired memory recall, unable to recognize faces and form, can't convert recent memory into long-term memory, has impaired improper emotion response to past memory. तो लीजन कहाँ है? That is in your hippocampus. सारे मेमोरी के प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ हिपोकैम्पस रिलेट होता है. आफ्टर हेड इंजरी पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन असेस्ड बाय हॉस्पिटल स्टाफ. एरिया डैमेज क्या होगा? दैट विल बी योर सुमेस्थेटिक, दैट विल बी योर वर्निकीज एरिया. राइटिंग और रीडिंग लैंग्वेज में उस कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम है. Patient came with back pain and lethargy. On examination, hand and fixed prostate present. His PSA is 49. तो 49 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है. दिस इज़ प्रोस्टेटिक एडिनो कार्सिनोमा. ई मैक्स ऑफ अ ड्रग 1 to 4 तक नॉर्मल वैल्यू होती है. इतनी वैल्यू आपको कार्सिनोमा में सिर्फ मिलती है. ई मैक्स ऑफ अ ड्रग आपको क्या दिखाती है? इट शोज़ यू अबाउट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग. अ पेशेंट विद टोसिस एंड मिड्रिएसिस विद हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, तो इसमें लाइकली कहाँ पे डैमेज होगा? देयर विल बी इन ऑक्यूलोमोटर नर्व. स्टेलेट गैंग्लियन फॉर्म्ड बाय, तो स्टेलेट गैंग्लियन इज फॉर्म बाय C8 to T1. ठीक है. इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन प्लस फर्स्ट thoracic sympathetic ganglion. A patient has history of jaundice, asterexis, tremors and other neurological manifestation. What is the mode of inheritance of this disease? तो इसमें आपको you will see autosomal recessive disorder. Alhamdulillah. Sorry for that. Okay. So, what is the mode of inheritance? That is autosomal recessive. Girl comes with increased fatigability with increased pigmentation on all body and splenomegaly having HB 8.1 MCV 58 MCHC 38 and ferritin बहुत ज़्यादा है. आयरन टॉक्सिसिटी हुई है. उसके मैनेजमेंट में आपने डिफिरॉक्सिमीन देना होता है. इसका एंटीडोट है. A patient known diabetic and hypertensive developed hemiparesis and recovered in 30 minutes. तो
He is suffering from transient ischemic attack. A patient has anemia, hypersegmented neutrophils are present on peripheral blood smear. तो एग्जामिनेशन पे व्हाट इज़ द कॉज हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको मिलते हैं इन मेगेलोब्लास्टिक फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया में. Person inhaled 1 liter air VA 0.2 PaO2 dropped by 6%. पार बॉइलिंग ऑफ पैड में आपने कौन सा वाइटामिन यूज़ करना होता है? दैट इज़ वाइटामिन B1. आफ्टर कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी व्हाट सप्लीमेंट नीड्स टू बी गिवन? कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी के बाद आप क्या दोगे? यू विल गिव वाटर सॉल्युबल vitamins. A patient with single palmar crease gap between 1 to 2, first and second toes, depressed nasal bridge, slanting eye, intellectual disability, flat facies but on karyotyping, 46X chromosome present. तो ये typical case है of Down syndrome. Woman with short height, weakness, thin arms, heart-shaped pelvis, making delivery difficult. इसमें कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी होगी? दैट विल बी विटामिन डी. Antigen antibody reaction will be depressed in liver disease. Patient being treated for hepatitis C, he experiences period of fever and rigors and sense of doom. Which medication is causing this? So this is caused by interferon. ये याद रखो कि हेपेटाइटिस सी है, फीवर और रिगर्स है और सेंस ऑफ डूम है, तो इसके लिए इंटरफिरॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल. हीन्स बॉडी और बाइट सेल्स में आंख बंद करके आपने G6PD को चूज़ करना है. होमोसेक्सुअल मेल वाइल टेकिंग अ शावर नोटिस ब्लू डिस्कलरेशन ऑन फोर आर्म. होमोसेक्सुअल मेल में आपको HHV टाइप 8 इन्फेक्शन आपको मिलेगा. कपोसी सार्कोमा, HIV. A patient got RTA, had massive bleed, his blood pressure is dropping. How to conserve blood pressure? तो इसमें आपने blood pressure को किस तरह conserve रखना है? You have to conserve it by increasing the total peripheral resistance. Severe deficiency of which vitamin leads to malignant carcinoid syndrome? तो niacin की वजह से. ये याद रखो कि it can cause malignant carcinoid syndrome. Which antilipidemic drug causes facial flushing? तो नियासिन आपके साथ facial flushing भी cause करवाता है. Pneumocystic cerevisiae infection occurs in CD4 count less than. जब CD4 count आपके साथ less than 200 होगा उसमें pneumocystic pneumonia, pneumocystic cerevisiae infection होता है. ठीक है, तो CD4 count का एक टेबल है फर्स्ट एड में, वो आप फिर देख लें. अच्छा, फिर है patient develop anaphylaxis against penicillin, which drug can be used? तो इसमें आपने कौन सा ड्रग देना है? यू हैव टू गिव क्लेंडामाइसिन ऑप्शन बी. अगर एक पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस अगेंस्ट पेनिसिलिन हो तो उसमें आप क्लेंडामाइसिन पर यूज़ कर सकते हो. पल्मोनरी स्टेनोसिस ऑफ टॉफ इज़ डिराइवेटिव ऑफ TOF, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में पल्मोनरी स्टेनोसिस आपके साथ होती है ड्यू टू सिक्स्थ एओर्टिक आर्च. Rheumatoid patient receiving treatment for many years now has lung issue, lower lobe crepes. Which drug is responsible? तो इसमें आपके साथ methotrexate will be responsible. Patient has history of chest pain and palpitation on examination. He has third heart sound and raised JVP. What is the likely diagnosis? तो चेस्ट पेन, palpitation है, थर्ड हार्ट साउंड आपको मिलती है इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. S4 आपको मिलेगा इन HOCM, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में. अ पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा. अच्छा, ये आपके साथ सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, दिस इज़ डायस्टोलिक डिसफंक्शन. हाइपरट्रॉफिक इज़ डायस्टोलिक डिसफंक्शन. अ पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा हैड रिब फ्रैक्चर एंड डेवलप चेस्ट पेन. देयर इज़ ब्लैक एरिया ऑन चेस्ट एक्स-रे. तो इसका कॉज क्या होगा? ब्लैक एरिया आपको न्यूमोथोरैक्स में मिलता है. दूसरी बात आपने इसके बारे में याद रखनी है कि अगर एक एथलीट हो यंग और उसमें सडन कार्डियक डेथ हो तो उसमें फिर आपने HOCM लिखना है. इन वीआईपोमा विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी विल बी सीन. तो वीआईपोमा में आपको क्या चीज़ मिलेगा?
ऑप्शन नंबर सी हाइपोकेलीमिया। ठीक है, वीआईपोमा में यू गेट हाइपोकेलीमिया। पेशेंट स्टार्टेड टेकिंग her ciprofloxacin, now had a pep, pop sound from his heel area and has pain. Thompson sign positive. What's the pathology? That is Achilles tendon rupture. Protein reabsorption capacity of nephron kidney hai, that is 30 milligram. Patient with progressive dysphagia for solid and liquid, severe chest pain, difficulty belching and air fluid level. ईसीजी पे आपको नॉर्मल कार्डिक इंजाइम्स जो हैं वो नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, तो ये बेल्चिंग एयर फ्लूइड लेवल्स आपको एकलेजिया में नज़र आते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच मैक्सिमम यूरिन ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? तो एडीएच में के प्रेजेंस में यू विल फाइंड 1200 मैक्सिमम यूरिन ऑस्मोलैरिटी। आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लिम्ब मूवमेंट लॉस बट रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रेजेंट, तो इंजरी कहाँ पे हुई है? दैट इज़ इन योर C7. A child has minimal change lesion, has frothy urine, माइक्रोस्कोप पे पिंक ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ proteinuria. A patient has fracture of surgical neck of humerus, now he can't raise his arm above his shoulder and also has sensory loss on the lateral surface of the arm. Which of the following muscle is damaged? The deltoid will be damaged. Deltoid muscle abducts and laterally rotates the arm, so fracture of humerus. At surgical neck damage axillary nerve that paralyzes the deltoid muscle. सेक्यूबेट्रिल आपके साथ क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इट इज़ अ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर. सेकंड, फेरिंजियल आर्च किस चीज़ का डिराइवेटिव है? इट इज़ अ डिराइवेटिव ऑफ स्टाइलोहायोइड. अ मिडल एज वुमेन विद इंक्रीज TSH नॉर्मल T3 and T4 हैविंग ओवरवेट, मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो दैट इज़ ड्यू टू hypothyroidism. Which antiemetic is given in patient before surgery preoperatively? Preoperatively before surgery आपने ondansetron देना है. Homocysteine to methionine conversion related to which vitamin? So it is related to vitamin B12. अच्छा, इसके बाद है फीमेल विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया हैज़ रेज्ड लेवल ऑफ 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वन सेल हैज़ टू क्रोमेटिड्स, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी. इन हिली एरिया पेशेंट डेवलप हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये किस वजह से? ड्यू टू आयोडीन डिफिशेंसी. अबाउट साइनस एरिथमिया ट्रू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू इंक्रीज डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम बैरोरेसेप्टर्स अनअफेक्टेड बाय द डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन एंड हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है. ओल्ड एज पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग नियर थिंग्स एंड एकोमोडेशन इशू, व्हाट इज़ द कॉज? तो ओल्ड एज पेशेंट है उसको कंप्लेंट है रीडिंग नियर थिंग्स में और एकोमोडेशन इशू भी है, तो इसमें लेंस कर्वेचर इज़ लॉस्ट. ड्यूरिंग एक्सरसाइज वीनस रिटर्न फ्रॉम लेग्स इंक्रीज ड्यू टू, तो एक्सरसाइज में वीनस रिटर्न फ्रॉम द लेग्स आपके साथ क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेग मसल्स. नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑन मेडिकेशन प्रेजेंट्स इन ER इन कोलैप्स स्टेट. पोटाशियम 6.5 हाइपरकेलीमिया है, ये क्यों कोलैप्स हुआ है? बिकॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. लेडी इन लास्ट ट्राइमेस्टर हैविंग मिल्क डिस्चार्ज, शी वॉज वरीड बट इट वॉज नॉर्मल. द मिल्क प्रोडक्शन इन लास्ट ट्राइमेस्टर किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रोलैक्टिन. अ फीमेल हैविंग वर्लाइजेशन रेज्ड ब्लड शुगर है, ट्रंकल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल स्ट्राया है, कुशिंग की तरफ जा रहा है, सो दिस इज़ अ केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. आप अगर कुशिंग ना हो यू कैन गो विद डायबिटीज़. सोशियोलॉजी आपके साथ बिहेवियरल साइंस का एक ब्रांच है. रिगार्डिंग सिकनेस, तो दिस इज़ पेशेंट परसेप्शन, पेशेंट रोल इन द कम्युनिटी. सिकनेस क्या होता है? इट इज़ सोसाइटल परसेप्टिव, that is patient role in community and community perception of patient role. Illness क्या होता है? Patient perception of symptom. Disease is professional perspective, that is doctor diagnose of disease. Sickness is related to patient not feeling well by himself.
which is posterior relation of left lung hilum. Left lung hilum का posterior relation you will find the descending aorta. एजाइगस वेन एंटीरियर होता है टू द रूट ऑफ लंग. ठीक है, पोस्टीरियर जो है आपने याद रखना है कि एओर्टा पोस्टीरियर टू द लेफ्ट रूट लंग. अगर रूट ऑफ लंग की बात आ जाए उसके एंटीरियर आपको एजाइगस वेन मिलेगा, उसके पोस्टीरियर आपको एओर्टा मिलेगा. अच्छा, अगर सिर्फ लंग की बात आ जाए तो उसके एंटीरियर आपको फ्रीनिक नर्व मिलता है, पीछे आपको वेगस नर्व मिलेगा. इन एओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, if in the aortic opening if diaphragm is constricted, which of the following structure will be compressed along with aorta. तो aorta के साथ और क्या चीज़ें compress होगी? that will be your thoracic duct and azygous vein. renal papillary necrosis किस वजह से होती है? it is due to NSAIDs. रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस सिकल सेल डिजीज़ या ट्राइट की वजह से, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, एनाल्जेसिक्स जिसमें एनएसएड्स आते हैं, और डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं. स्टाइलोफेरिंजियस मसल, तो ये फेरिंजियस कीवर्ड है थर्ड आर्च का, थर्ड फेरिंजियल आर्च में आपको मिलेगा. फेज़ 1 रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दैट इज़ ऑक्सीडेशन. ट्रू रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग क्या है? amongst the following true is that almost all drugs have adverse effects. Patient presents to clinic with his Hb being 4 and spherocytes with Coombs test positive. So this is because of autoimmune hemolytic anemia. Mechanism of reduction in size of organ if patient undergoing chemotherapy, that is due to apoptosis. Patient presented with ascending paralysis develop lower limb weakness than upper limb. History of infection few days back. What is the most suitable diagnose? तो इसमें क्या suitable diagnose होगा? Ascending paralysis है, weakness of the upper limb है. This is because of GBS. Ascending paralysis आपको GBS गुलियन-बेयर syndrome में मिलेगी. गुलियन-बारे. Patient presented with ascending paralysis. फिर GBS के बारे में. Develop lower limb weakness and upper limb. Had history of infection few days back. This is again the same question. A patient developed chest pain. ECG shows STEMI. Most specific biomarker for ischemic injury of cardiac tissue in the first 4 hours. So that is in the first 4 hours is CKMB, के troponin I. अच्छा, a patient develop ECG shows STEMI. मोस्ट स्पेसिफिक. अच्छा, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो I am specific, trope I is specific and trope T is sensitive. 12-year-old boy presented with diarrhea not responding to routine antidiarrheal treatment. jejunal biopsy पे आपको विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और पास पॉजिटिव मैक्रोफेज नज़र आ रहे हैं. तो ये कीवर्ड है पास पॉजिटिव. पास आपको किस में मिलता है? ये आपको मिलेगा इन विपल्स डिजीज़, ऑप्शन नंबर ई. अच्छा, फिर है पेशेंट वॉज गिवन डिक्लोफेनिक फॉर पेन. इट एक्ट्स एज एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी. क्योंकि ये आपके साथ क्या इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट्स द कॉक्स-2 को इनहिबिट करेगा. COVID-19 recently shows a species transfer which is named as SARS-CoV-2. Bioavailability of drug becomes important determining factor when administered through which route? So it is administered orally. In summer fasting men have concentrated urine. ये किस वजह से? due to increase ADH. सोडियम ब्लॉकिंग एंटी एरिथमिक ड्रग फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हमने क्या देना है? वी हैव टू गिव लाइडोकेन. अ पेशेंट लॉस्ट फाइन डिस्क्रिमिनेशन, टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एट द लेफ्ट बिग टो. तो ये सारी चीज़ें आपको DCML में मिलती है. तो दिस इज़ द राइट मीडियल डॉर्सल लेमेनिस्कस. Patient with right-sided hemiplegia, left-sided pain and temperature loss below T8, while right-side proprioception and touch sensation lost below T8. तो ये आपके साथ हेमी सेक्शन हुई है at T8.
फ्रैक्चर ऑलवेज प्रेजेंट फीचर ऑलवेज प्रेजेंट इन एस्थमा इज, तो एस्थमा में आपको क्या चीज़ हमेशा मिलेगी? दैट विल बी डी तो गलत है, इंक्रीज FEV1 बाय ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन सी। A man with short height, neuronal trunk but disproportionately small limbs present with raised sugar cholesterol, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? This is because of decreased somatomedin C. In short, man with disproportionately small limbs, hormone cannot act on their receptor because this is related to Laron syndrome. Laron syndrome क्या है? Is also known as growth hormone insensitivity या growth hormone receptor की deficiency होगी, उसे हम कहते हैं Laron syndrome. ये एक autosomal recessive disorder है, इसमें lack of insulin like growth factor 1 production in response to growth hormone. Patient can differentiate between colors, तो ये किस वजह से? Because of the discrimination of sensory stimuli. पेशेंट अनएबल टू इनिशिएट मूवमेंट, तो मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर सकता बिकॉज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन विल बी लॉस्ट. सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन में क्या होगा? सिंगल लिपिड लेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर विद कार्ब्स एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ठीक है. अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक HHS की बात कर रहे हैं, तो HHS में आपको क्या मिलता है? यू फाइंड hypokalemia as well. ठीक है, so don't forget to subscribe before leaving. Please do remember I'm making all these efforts for you guys. तो आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है इस चैनल को. This was enough for today's lecture. Hope you have learned a few MCQs from here. So thanks for watching and inshallah see you in the next video.